Today we are going to learn the second lesson of first unit, an encounter of a special kind. First of all, we read the paragraph and after that I will tell you the hard words of the lesson, of the particular paragraph. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers' club was adjacent to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious with a green grass, colorful flowers, and a host of tall and majestic trees. The seasonal vegetables in the kitchen garden of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. A group of langurs had even made their den in a aswatha tree nearby. They had all become a part and parcel of our existence and daily life. Today, we will see the hard words of this particular paragraph. An encounter. What is mean by encounter? First of all, I would like to tell you about this lesson. In this lesson, a special kind of encounter with a langur is given. This is a story by Tapan Mukherjee about a young boy who rescued, nursed and saved a baby langur attacked by a dominant male langur with intent to kill it. The story depicts a bond of trust, compassion and mutual understanding between man and animal. That is the thing which is given in this lesson. So here we see that an encounter of a special kind. So what is meant by encounter? Encounter means meet unexpectedly, यानी अचानक सामना होना या मुठभेड़ भी इसको बोलते हैं. एंड स्पेशल काइंड यानी विशेष प्रकार की, स्पेशल यानी विशेष और काइंड यानी प्रकार. अब किस प्रकार का एनकाउंटर है ये इस लेसन में अपने को दिखाई देगा. My father, here the writer said, Tapan Mukherjee, my father was a medical professional working. मेडिकल यानी औषधि या वैद्यकीय जिसको बोलते हैं, एंड प्रोफेशनल यानी व्यवसाय विषयक, यानी मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग यानी वैद्यकीय व्यवसाय में काम करते थे इनके फादर राइटर के. On a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual यानी वैयक्तिक अपना bungalows inside a large campus. यानी यहाँ पे large campus यानी बहुत बड़ा area. Our house was in a corner of the campus. The officers club was adjacent यानी करीब, पास, nearby to the boundary wall of our garden. The compound was luxurious. Luxurious का मतलब क्या होगा कि बहुत ही आरामदायक, सर्व सुविधाओं से युक्त ऐसा. With a green grass, colorful flowers and a host यानी झुंड बोलेंगे जिसको अपन host of a tall and majestic यानी बहुत बड़े भव्य trees, पेड़. The seasonal vegetables, seasonal यानी सीजन में जैसे सीजन वाइज जैसे आते हैं ऋतु वाइज वैसे वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन. किचन गार्डन का मतलब होता है किचन के पीछे का एरिया जिसमें सब्जियां लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड मैग्निफिशियंट ट्रीज. अगेन मैग्निफिशियंट हियर मैंने बहुत बड़े बड़े भव्य ऐसे.
कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वेरल्स, स्क्वेरल यानी गिलहरी, एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, स्पेसीज यानी जातियां, अनेक पक्षियों की जातियां. अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड गिवन, लंगूर, लंगूर यानी बंदर, लंगूर्स हैड मेड देयर डेन, डेन यानी निवास स्थान, रहना, रहने की जगह, इन अश्वत्था ट्री नियर बाय. अश्वत्था ट्री, व्हाट इज मीन बाय अश्वत्था ट्री? तो दिस इज द ट्री वेयर बुद्ध did meditate and gain a lot of knowledge. Here, this is called अश्वत्था ट्री, जिसको अपन पीपल का पेड़ या ऐसा बोल सकते हैं. They had all become a part and parcel of our existence in a daily life. यानी वह एक उनके जिंदगी का एक भाग हो गया था, उनके रोजमर्रा के जीवन का वह एक भाग हो गया था. So, the next period we will see the explanation of this paragraph. Thank you.